going to start the second chapter of the biology class 12, sexual reproduction in the flowering plant. As you all know that flower is the fascinating organ in all the angiospermic plant. They are kept under the phanerogames, so they have the flower. Flower is the reproductive organ. It has the male reproductive organ as well as the female reproductive organ also. Flower may be unisexual, may be bisexual. Unisexual flowers, they have only single sex in the flower, whether the male or female. Bisexual flower comprises both the reproductive organs together. So this is the LS of the bisexual flower. You can see this portion is called as anther. This is filament. Both part together called as stamen. Stamen is the male reproductive organ. Like that, the stigma, the style and the ovary, these are the three parts. Together they comprises the pistil. So pistil is the female reproductive part and the stamen is the male reproductive part. Except to that, they have some accessory organs also. Flower has some accessory organ. This is the corolla. And this structure is called as calyx. Calyx is also called as sepal. Corolla is also called as petal. These two structures are the accessory floral organs and they help in the process of reproduction indirectly. As you know that corolla is brightly colored, so they help in the pollination process. Calyx covers the developing flower, so they work as a protective role there. Okay, so this is about the LS of the flower. Okay, now we are going to discuss the male reproductive organ in detail, that is the stamen, microsporangium and pollen grain. As you know children, the stamen comprises the anther and the filament. When we cut the transverse section of the anther, we have this structure. Our stamen is bilobed structure. As you can see this in diagram, it has the bilobe structure. And each lobe of the anther, it has the two microsporangia. And that is why the angiospermic stamens are called as tetrasporangiate. Tetrasporangiate means it comprises the 4 microsporangium. Microsporangium is a sac-like structure. It has the pollen grain in them. So when you cut the TS of this, you have this particular diagram. This is the connective of the anther, connective portion by which they get the nutrient and water from the soil. And each and every lobe, this particular microsporangium has 4 protective layers. So one by one we will see this. First outermost layer is called as epidermis. Inner to that there is called endothecium. Next to that there is a some 2 to 3 layer structure. This is called as what? Middle layer. And the innermost layer is called as tapetum. These 4 layers are very important. They are protective in nature, okay? In which the endothecium, it also play a very important role in the dehiscence of the anther. जब anther mature हो जाता है, उसके pollen grains mature हो जाते हैं, तो इस एंथर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ की एंडोथीसियम बहुत ही पतली होती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टोमियम. Okay, so this asked in your competitive exams also कि स्टोमियम is the line of dehiscence of the anther. यहीं से ये पर्टिकुलर एंथर रप्चर होना शुरू होता है और ये pollen grains जो होते हैं वो बाहर आके डेहिस करते हैं and they are ready for the process of pollination. Okay, so middle layer is also 2 to 3 in protective nature and the fourth, the innermost layer is called tapetum. Tapetum is very important. It provides the nourishment, nutrient to the developing microspore mother cell. These are called what are? Microspore mother cell. When we call the mother cell, we
know that its ploidy is 2n. Its ploidy is 2n in number. So microspore mother cells are in diploid form. Okay, there are the 4 important layers. You know this very well. Okay, again this microspore mother cell undergo the process of meiosis. Okay, and they form haploid pollen grains. So before forming direct pollen grain, they first develop the pollen tetrad. Okay, such type of structure is called as pollen tetrad. This is tetrahedral diagram of the pollen tetrad. Okay, this pollen tetrad, in between there is a wall of callose. Okay, it is very important. It is a wall of callose. This callose wall dissolve and each and every pollen grain come out. Okay. So children, now we are going to discuss the detailed structure of the pollen grain. If you see the pollen grain is what? It is the male gametophyte. Okay, it is haploid structure. It is the male gametophyte. Each and every pollen grain is 2-celled structure. This cell is called as what? 2-celled stage. Okay. Each pollen grain, when it is in 2-celled stage, it has the bigger one vegetative cell and the smaller one is called generative cell. Clear? Normally क्या होता है कि ये pollen grain जो होता है ये 2-celled stage में ही एंथर से डेहिस होता है. ठीक है, बट बहुत से ऐसी स्पीशीज हैं जहाँ ये pollen grain 3-celled stage में भी डेहिस होता है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो जब ये 3-celled stage में डेहिस होता है, इन दैट केस इट बिकमिंग लाइक दिस. आप देख सकते हो यहाँ पर this particular vegetative cell is remain as such, but the generative cell becoming into 2 male gamete. यहाँ पे इसके पास 2 male gamete का formation हो जाता है. ठीक है, but very important to know that कि each and every pollen grain has 2 important layer. This outer layer is called as what? Exine. इसको क्या कहते हैं? Exine कहते हैं. And the innermost very smooth layer is called as intine. A pore is present here. This pore is called as what? Germ pore. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Germ pore कहते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? The role of this sporopollen. It is very important. Sporopollen से बना होता है exine, means the exine having the sporopollen, and that is why this pollen grain we can preserve this as fossil. ये कभी भी degrade नहीं होता. It cannot be degraded by any alkali, by any acid. Okay? Why? Because it has the sporopollen. Sporopollen पूरे pollen grain के केवल इस portion पर absent होता है. That portion we called as what? Germ pore. Germ pore जहाँ से intine growth करके, develop करके, germinate करके pollen tube का formation करती है. Clear? और कुछ इस तरह का आपको structure दिखाई पड़ता है. ये देखिए, ये this is the intine. At the point of the germ pore, it develop into the pollen tube and normally it is surrounded by the exine. So exine is absent at the point of the germ pore. It has the 2 male gamete. ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन स्टिग्मा के पास होती है जब कोई भी पर्टिकुलर pollen grain fall करता है over the surface of stigma by the process of pollination. Then the 2-celled stage is becoming into the 3-celled stage. तब जाकर pollen का germination होता है और pollen जो है वो 3-celled stage में convert होता है. It has the 2 male gamete. That इसके पास 2 male gametes हो जाते हैं and it is ready for the double fertilization. So we will later on see the double fertilization process. But before this, I am going to discuss some important advantages of the pollen. Pollen is not important for the process of pollination और या ये केवल pollination fertilization ही नहीं करता. You know, pollen syrups are available in the market.
Pollen tablets are available in the market. Pollen syrup, pollen tablet हम रेस हॉर्सेस को देते हैं, एथलीट्स भी इसको यूज़ करते हैं. क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू. इसकी बहुत सी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी होती है. दिस इज़ अ बिग एडवांटेज ऑफ द पॉलन. ओके, हनी बी जो होती है वो नेक्टर को कलेक्ट करती है, बट पॉलन सिरप से हमको डायरेक्ट न्यूट्रिशन पॉलन्स का डेवलप होता है हमारी बॉडी के अंदर. बट इट हैज़ अ डिसएडवांटेज ऑल्सो. क्या? लाइक एलर्जी, लाइक ब्रोंकाइटिस. क्लियर? एक पॉलन एक स्पीशीज होती है, दैट द नेम ऑफ द स्पीशीज इज पार्थेनियम. ओके, जिसको हम कैरेट घास भी कहते हैं, इसको हम गाजर घास भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांग्रेस ग्रास. So this Parthenium, its pollens are aerosolic in nature. ये फ्लोट करते रहते हैं एयर में. डायरेक्ट हमारे नोज में इनहेल करने से we suffer from the disease bronchitis, asthma. तो ये respiratory disorders भी cause करते हैं. तो pollen, it is not advantageous only, they have some disadvantageous functions also. Okay, now children, we are going to discuss the microsporangium, the female gametophyte. Okay, the structure of the egg, the ovary inside, what the structure is present. So first of all, we are going to discuss the microsporangium, the ovule. Ovule, in front of you, this is children anatropous ovule. Okay, this structure belongs to anatropous. Why I am telling anatropous? Ovules are of 6 types. So these all kind of ovule are divided on the basis of the position of the funicle and the micropyle. This particular portion 4 is called as micropyle and this is called as funicle. So the position of the micropyle and funicle, you can observe it is near about 90 degree. So such kind of ovule, when the position of the micropyle and funicle is having a 90 degree, this is called as anatropous ovule. So in our course there is an anatropous ovule. Okay. So first of all, each and every ovule has a centrally embryo sac is present. This embryo sac comprises the antipodals. Centrally, it has the 2 polar nuclei, and here you can observe middle there is a presence of egg. Okay, and this is surrounded by the 2 synergids. So this particular structure, the egg and synergid, totally it is called as what? Egg apparatus. Okay, this is called as egg apparatus. So this is the structure, overall structure of the microsporangium, that is the ovule. The embryo sac, children, is also called as female gametophyte. So now let's discuss the microsporogenesis. Okay, now we are going to discuss the megasporogenesis. Mega word normally children we use for the female structure and micro we use for the basically for the male structure. So megasporogenesis is what? It is the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell. Okay, megaspore mother cell, this is diploid structure. This is shortly called as MMC, मेगास्पोर मदर सेल. जैसे आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल देखा था जिसकी प्लॉइडी ट्वेन थी, लाइक दैट मेगास्पोर मदर सेल्स भी होते हैं. अब हम बात करेंगे कि कैसे इन मेगास्पोर से इस ओव्यूल का फॉर्मेशन हुआ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर, क्लियर, इट हैज़ अ डिविजन ऑफ सच काइंड, क्लियर. This particular is called as primary parietal cell and this particular is called as primary sporogenous.
Normally parietal word we use for the periphery and for the protective layers. तो यहाँ भी ऐसा है, ओव्यूल के जो इंट्यूगमेंट्स हैं, आउटर इंट्यूगमेंट, इनर इंट्यूगमेंट्स, उनके लिए हम प्राइमरी पैराइटल वर्ड यूज़ कर रहे हैं. एंड स्पोरोजिनस सेल बेसिकली जो ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे, उनको हम बोल रहे हैं. सो वी जस्ट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट द प्राइमरी स्पोरोजिनस. नाउ व्हाट विल हैपन, ये स्ट्रक्चर जो है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से देखें. इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ओके, मियोसिस करते ही इसके पास क्या होगा, आप देख सकते हो, मियोसिस करते ही इनके पास 4 सेल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा. ओके, बट व्हाट हैपन नॉर्मली, द अपर 3 आर डीजेनरेट्स. ये ऊपर के 3 जो है वो डीजेनरेट होते हैं. एंड वी हैव द सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर. चिल्ड्रन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल मेगास्पोर. क्यों मैंने बोला इसको, क्योंकि आगे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो केवल और केवल यही मेगास्पोर से डेवलप होगा. This is a single functional megaspore, and that's why the Guha and Maheshwari say this process also the monosporic development. इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं. क्यों, क्योंकि सिंगल स्पोर ने 7 न्यूक्लियाई पूरे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किया. सो दिस फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस. ओके, ये माइटोसिस करेगी, और माइटोसिस करके यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव दी 2 particular cells. This again undergo the process of mitosis. Such condition develops. Okay, 4 cell stage. सिंगल सेल पेनिट्रेट इनसाइड. ये कंडीशन डेवलप करेगी, एक एक सेल सिंगली आएगी, और आप देख सकते हो कि कौन सी कंडीशन डेवलप करेगी, लाइक दिस. 1 is here, okay, and centrally the 2 cells are present. Clear? या आप इसको बिल्कुल इस तरह भी समझ सकते हैं, अगर सिंपल में आप देखना चाहो तो डबल माइटोसिस हम एक साथ करा लेते हैं. सिंगल माइटोसिस वी हैव 2 cells. अगेन द सेल अंडरगो द माइटोसिस. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Okay, one cell comes in the center. Okay, and the condition which is developed is like this. 3 cells above, 2 are in the center position, and next 3 remaining here. So this is the condition we have inside the embryo sac. This is the development of the microsporangium. How the microsporangium develop? You can see 3 synergids are there. Single egg is here with 3 antipodals are there. Single egg is here surrounded by the 2 synergids, and centrally there is a 2 polar nuclei. So this is the condition of the Megasporogenesis, the development of the female gametophyte. This is also called as polygonum development. Okay, this is also called as 8 nuclei 7 cell stage development. Why? देखिए आप खुद ही कि this particular sometime they fuse and form the secondary nucleus. ये पोलर न्यूक्लियाई कभी कभी फ्यूज करके एक सिंगल सेल बना लेते हैं, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं. तो 1 cell 3, 3, 6 and 1 7 cell, but nuclei are 8. So condition is called 8 nuclei 7 cell stage. Condition is called polygonum development. क्यों? क्योंकि यहाँ पे poly many gametes 8 haploid structures are present, so that it is called polygonum, many haploid structures, and the monosporic development also. So this is the overall megasporogenesis. Okay, now let's discuss the process of pollination. After maturation of the anther dehisce, the pollen grains come out and they are ready for the process of fertilization.
So before the fertilization, there is a process of pollination. It is very important. So children, now discuss what is pollination. The transfer of the pollen grain onto the surface of stigma, that is called as pollination. आपने smaller classes में पढ़ा होगा self pollination, cross pollination. But now let's discuss the detailed account of the pollination. Broadly, we classify the process of pollination into three main categories: autogamy, geitonogamy and xenogamy. Okay, autogamy, the word we use here means the process governs in the single flower, same flower. Flower should be bisexual. Okay, सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी बोलेंगे। ऑटोगैमी को फिर हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड चैस्मोगैमी, अनदर इज कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी जब फ्लावर क्लोज्ड होगा तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। ओके, बट जब इस प्रोसेस में फ्लावर ओपन होगा, सिंगल फ्लावर ही ओपन होगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? चैस्मोगैमी बोलेंगे। ओके, सो चैस्मोगैमी में फ्लावर ओपन होता है, क्लिस्टोगैमी में फ्लावर क्लोज होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फ्लावर एक ही है। क्लियर? हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हैं इसके। अगर हम बात करें ऑक्सैलिस की, कोमेलिना की, क्लियर, सो दे प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, चैस्मोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। बट कंडीशन क्या होगी कि क्लिस्टो में क्लोज फ्लावर होगा, तो एक इसके साथ फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है क्लिस्टोगैमी के साथ? एश्योर्ड सीड सेट। ओके, सीड सेट क्या होगा? एश्योर्ड होगा, होना ही होना है, बिकॉज जो पॉलन ग्रेन्स है उनका कहीं वेस्टेज नहीं है। बट देयर इज़ अ डिसएडवांटेज ऑल्सो। वो डिसएडवांटेज क्या होगी कि देयर नो एनी वेरिएशन टेक्स प्लेस, कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो हूबहू आने वाला है। सो देयर इज अ एश्योरिटी ऑफ द सीड सेटिंग बट नो वेरिएशन टेक्स प्लेस। हियर सीड सेट एश्योरिटी इज नॉट देयर, वेरिएशन इज ऑल्सो नॉट देयर, बट मे बी। ओके, सेकेंड कंडीशन इज कॉल्ड जेटोनोगैमी। जेटोनोगैमी को कुछ ऐसे समझते हैं हम लोग कि प्लांट तो एक ही है बट फ्लावर्स आर डिफरेंट। सपोज दैट दिस इज द प्लांट, it has the two flower. Okay, ऑटोगैमी में फ्लावर एक ही था, बट जेटोनोगैमी की बात करें तो मे बी द पॉलिनेशन गवर्न्स इन बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज जेटोनोगैमी। जेटोनोगैमी यू कैन से द ब्रिज बिटवीन द ऑटोगैमी एंड xenogamy। Xeno वर्ड चिल्ड्रन मीन्स डिफरेंट। ओके, मतलब यहाँ पे टू प्लांट्स का डेवलपमेंट है, फ्लावर्स आर डिफरेंट, प्लांट्स आर डिफरेंट। लेट्स सी, दीज आर द टू डिफरेंट फ्लावर एंड देयर आर टू डिफरेंट प्लांट्स ऑल्सो। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट्स, टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट, देन द कंडीशन ऑफ द xenogamy will come. So this is pure cross pollination. This is two condition of the self pollination. आप चाहो तो pollination को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हो, अगर सेल्फ और क्रॉस, तो सेल्फ पॉलिनेशन के दो पर्टिकुलर प्रोसेस हो जाएंगे, ऑटोगैमी एंड जेटोनोगैमी। बोथ आर अंडर द सेल्फ पॉलिनेशन। फ्लावर सेम, टू डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। xenogamy, two different flower of the two different plant. Variation occur here. Mainly the variation occur here. So this is about the pollination. In our course there is a cross pollination in detail account. You know that कि cross pollination के लिए we need some agents. हमको some agents चाहिए. Agents may be water. अगर water as a agent होगा तो that condition we called as what? Hydrophily. हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिली बोलेंगे अगर वाटर इज द एजेंट। अगर एजेंट जो है हमारा विंड होगा, एयर होगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एनिमोफिली। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब जब हम वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं।
ओके, इंसेक्ट्स अगर हैं हमारे एजेंट्स तो एंटमोफिली, ओके, बर्ड्स अगर पॉलिनेशन को कर रही हैं ऑर्निथोफिली, ओके, स्नेल्स अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं तो मेलाकोफिली, ओके, स्नेक्स अगर पॉलिनेशन कर रहे हैं ऑफियोफिली, okay. In our course there are only three, that is the anemophily, the entomophily and the hydrophily. ये तीन हमको डिटेल में पढ़ना है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन एज वेल एज द एयर के थ्रू पॉलिनेशन। कॉमन सी चीज़ है कि अगर एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे दे आर वेरी वेरी लाइटर इन वेट, नॉन स्टिकी होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए, इनके स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए। अगर आपने कभी कॉर्न को देखा है तो कॉर्न के जो टैसल्स होते हैं, जो उसके ऊपर जो हेयरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द स्टिग्मा ऑफ दैट कॉर्न। इट शुड बी फेदरी, फ्लफी टू कैप्चर द पॉलन फ्रॉम द एयर। तो इस तरह का पॉलन होना चाहिए और पॉलन ग्रेन्स जो होंगे उनको लाइट